जय श्री प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। Welcome everyone for attending today's first program here. आप सभी का स्वागत है यहाँ के प्रथम कार्यक्रम के। All glories to our founder Acharya Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के कारण से ये सब संभव हुआ है। Because whatever we have done and whatever we are doing today and whatever we are going to do is simply an offering to Prabhupada. जो भी हमने अभी वर्तमान में कर रहे हैं, भूत भविष्य में किया है, भूत भविष्य में करेंगे, और सभी श्रील प्रभुपाद के कारण से ही संभव हो पाया है। It's not our place, it's not our temple, everything is Prabhupada. ये कोई हमारी खुद की जगह नहीं है या फिर हमारा मंदिर नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद का मंदिर है। And as devotees, we are all devotees, struggling devotees. If we keep Prabhupada in the center, then we will all stay united. और ये सभी भक्त जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं भक्तों, अगर हम सभी प्रभुपाद को केंद्र में रखेंगे तो हम सभी एक साथ रहेंगे। So I've been coming here to Udaipur now for over 30 years. Since last 30 years. पिछले 30 साल से प्रभु जी उदयपुर आ रहे हैं। Oh, I'd like a drink of water actually. Very thirsty. And so over 30 years you've seen a lot of change. 30 सालों में बहुत परिवर्तन दिखे हैं यहाँ पर, especially in the last 5-6 years. विशेषकर लास्ट के 5-6 सालों में। When I joined ISKCON 1981 in Australia, at that time it was a different ISKCON than it is today. जब प्रभु जी ने 1981 में ऑस्ट्रेलिया में ISKCON को ज्वाइन किया था, तब ISKCON अलग था जो कि आज है। My friend here, Janalada Prabhu, he's Prabhupada's direct disciple. When did you join? 1969. It shows his age. 1969. If you talk to him, he will tell you that time was a completely different ISKCON than it is today. तो हमारे बहुत सौभाग्य है कि प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य यहाँ पे हमारे सम्मुख मौजूद है, जो कि उन्होंने 1969 में ज्वाइन किया था। When Srila Prabhupada began this society, he needed more manpower. So when you would become convinced to be a devotee, it meant you would join the temple full time. जब प्रभुपाद ने ISKCON शुरू किया था, तब बहुत सारे भक्तों की आवश्यकता थी। तब जब भी कोई शुरुआत में जुड़ता था, तो उनको बोलते थे कि आप मंदिर को पूर्ण रूप से ज्वाइन करिए। So we were busy making brahmacharis and connecting grihastas, but whoever connected, whatever he was doing, he would give up and join full time. और प्रभु जी जिसे प्रचार करते थे और ब्रह्मचारी बनाते थे और गृहस्थ लोगों को भी संपर्क करते थे, और जो भी जब कनेक्ट होता था तो उनको बोलते थे कि सब कुछ छोड़ दीजिए और ब्रह्मचारी बन जाइए और सेवा करिए। And in those days, of course, everybody was very new, not much maturity, not much understanding, not much knowledge. उस समय की बात है जब सभी बहुत नए थे, जब उस समय उनको इतना अनुभव नहीं था और बहुत नए थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था। So if you join the temple full time, you're a devotee, and if you didn't join full time, you're not a devotee. तो उस समय परिभाषा इस प्रकार से थी कि अगर पूर्ण रूप से आपने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया तब आप भक्त हैं, नहीं किया तो आप भक्त नहीं है। And so full time devotees we grew, the numbers grew,
And they opened many new temples. Srila Prabhupada was very happy. 108 temples opened up, thousands of disciples. ISKCON expanded. तो जो पूर्ण रूप से ज्वाइन करने वाले जो ब्रह्मचारी हैं वो बहुत सारे हुए और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में बहुत सारे सेंटर खोले. But how much can 8, 10, 20 full-time devotees in a center, how much can they actually do? लेकिन 8, 10, 20 भक्त एक सेंटर में क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? No, we are limited. We are not Prabhupada. We're all limited by our material desire, by our consciousness, by our ahankara. We're all limited what we can actually do. हमारी क्षमताएं सीमित है, हम श्रील प्रभुपाद के स्तर के नहीं है, तो हम कुछ क्षमता के अनुसार सेवा कर सकते हैं. So we are preaching, doing what we can. Book distribution is going on. Food for Life was going on. Temples were going up. Things were growing. तो हम प्रचार कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और प्रसाद वितरण कर रहे थे. इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों को ज्वाइन करवा रहे थे. But then there came a point when we looked around and we realized, oh, now we have a congregation. Then we realized, actually, devotees had started coming. They are not full-time, but they're also devotees. Then we realized there's this thing called congregation devotees. तो अभी गृहस्थ भक्त का हमें पता पड़ा कि जब बहुत सारे समय हो गया तो बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी देखा उन्होंने, तो लगा कि सिर्फ हम ही भक्त नहीं है, गृहस्थ भी भक्त है. तब लगा कि अब हमारे पास एक भक्तों का समूह है जो ब्रह्मचारी भी है और गृहस्थ भी है, दोनों है. So Prabhupada was mentioning this 4 varnas. So we have these full-time, Brahmanically inclined, full-time devotees. They are guiding the mission. तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से बताते हैं कि 4 वर्ण होते हैं, तो उसमें से जो ब्राह्मण है वो सभी को गाइड करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं. But then we realized 99% of society is Grihastha ashram. फिर महसूस हुआ कि 99.9% सिर्फ गृहस्थ है. So then the idea was there, then how to engage those people. Prabhupada said, I built a house in which the whole world can live. Everyone in the world can come within this house. तो अब ये समझ में आया कि किस प्रकार से इन सभी लोगों को सेवा में लगाया जाए, जो 99.9% थे. तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा विश्व रह सकता है. Actually in Vrindavan, when they're having the temple opening, in early days in Vrindavan, Srila Prabhupada was saying, he said that everyone should become Krishna's devotee. That's the plan. श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन का ISKCON मंदिर जो खुला था, इनोवेशन किया था, तो बोल रहे थे जो भी मंदिर में आता है वो सभी को भक्त बनाइए, ये हमारा प्लान है. That was Prabhupada's plan. That is such a huge plan. His plan was everyone in the world should become Krishna's follower. That's my plan. श्रील प्रभुपाद का कितना बड़ा प्लान था कि जितने भी लोग रहते हैं वो सभी कृष्ण के भक्त बने. These early days, Vrindavan, Prabhupada was expressing to the devotees. And you've heard this where Prabhupada says, preaching is the essence. Everybody should preach. शुरुआत में उन्हें श्रील प्रभुपाद का ये आइडिया था और हमने सुना है प्रचार ही सार है. So some senior devotees were saying to Srila Prabhupada, you are saying, preaching is the essence. We should all go and preach Krishna consciousness. तो कुछ वरिष्ठ भक्त बोल रहे थे, श्रील प्रभुपाद आपने बोला है प्रचार ही सार है, तो हम सबको बाहर जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए. So Prabhupada said, yes, you create facility, you make arrangements, and I will preach. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ आप बाहर जाइए, अलग अलग जगह पे जाइए और सभी लोगों के लिए फैसिलिटी बनाइए, लोगों के लिए रहने के लिए सुविधा बनाइए, मंदिर बनाइए और मैं आऊंगा और प्रचार करूंगा. So if we want to expand, Prabhupada is saying, if you want to expand, you can have your full-time devotees, that's required. You need to make brahmacharis, that's required. But also you have to develop huge congregation. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी आपको विस्तार करना है तो आपको ब्रह्मचारी चाहिए, सही बात है, लेकिन आपको गृहस्थ भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो उसके बाद पूरा अच्छे से विस्तार हो पाएगा. Now there's a place for everyone, every age, every gender, there's a place for everyone in Prabhupada's house. श्रील प्रभुपाद के घर में सभी के लिए व्यवस्था है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो. And somehow we all become engaged. By Jagannath's mercy, somehow or other, Mr. Chaudhary got engaged, everybody got connected,
this temple was here, now we came, it's completed, and today Jagannath has come here. जगन्नाथ जी की कृपा से हम सभी सेवा में जुड़ गए हैं और सभी कुछ न कुछ सेवा कर पा रहे हैं और हमारे चौधरी प्रभु जी भी सेवा में अच्छे से लग गए हैं. So it's up to us now. Temple is beautiful, temple is wonderful, but the real thing, a part of a temple is the preaching, the expanding and preaching and connecting people. तो अभी हमारे पास मंदिर आ गया है, लेकिन प्रमुख कार्य है प्रचार करना. अब हमारे सब हमको प्रचार करना है, विस्तार करना है. So who here, raise your hand, who here feels themselves to be a preacher? यहाँ पे बताइए कौन कौन हाथ रखना चाहेगा कि वो प्रचारक है. Oh, good, 2 hands. Yes, okay. Yes, we are preachers. On behalf of Srila Prabhupada, we are the preachers. श्रील प्रभुपाद के बिहाफ पे हम सभी प्रचारक हैं. It's a consciousness, preacher consciousness. It's a mentality. You have to develop that mentality of a preacher. और हम सभी को प्रचारक की चेतना विकसित करनी है. It's not a part-time job, preaching. My job is my part-time job. Whatever I do to maintain myself, that's my part-time. I have no choice. But my focus is a preacher. तो हमारा जो जॉब है वो एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन प्रचार है वही हमारा पूर्ण रूप से कार्य है. Just like Sundarlal Prabhu, he is temple president from Jodhpur. I was watching him. जैसे सुंदरलाल प्रभु जी टेंपल प्रेसिडेंट हैं जोधपुर के. He's a youth preacher. He can make brahmacharis. He's a brahmachari factory. ये युवाओं को प्रचार करते हैं और उनको ब्रह्मचारी बनाते हैं. So we were having kirtan, and people are coming and offering some flowers and joining, and but his eye is going on. He's looking around, and when he sees some young guy, he's immediately, what chances here? He's immediately seeing any potential. सुंदरलाल जी सबको देख रहे थे और देख रहे थे कि कौन युवा भक्त है, तो युवा भक्त को पकड़ते थे वो और उनको बोलते थे कि हाँ ये ज्वाइन कर सकता है. That's what it means, right? That's what it means to be a preacher. You've got your eye focused. Your eye is on them. Eye is focused. Who's a potential? Will he be devotee? How can I bring him to Prabhupada? How can I catch him to Prabhupada? यही प्रचारक की खासियत होती है कि वो बहुत केंद्रित होता है कि उसको पता है कि मुझे किसको प्रचार करना है और किस प्रकार से उनको श्रील प्रभुपाद के चरणों में लेके आना है. And everybody has their place where they're effective, where their preaching is effective. और सभी भक्त अपने अपने अनुसार प्रचार कर सकते हैं जहाँ पे उनको पता है कि सबसे अच्छा प्रचार कर सकते हैं. Sannyasi, he can sit on the asana, he can give Bhagavat Katha and attract people. जैसे सन्यासी आसन में बैठकर बहुत से लोगों को कथा कर सकते हैं. But he cannot socialize. But his sannyasi, he cannot socialize with people. लेकिन वह सामान्य लोगों के साथ मिलजुल नहीं कर सकते. And where Grihastha, he has his own field. He can socialize in the marriage party, here, there, some other, join some club, and within that, he can catch people. लेकिन गृहस्थ लोग काफी अंदर तक समाज के अंदर जा सकते हैं और अलग-अलग तबके के लोगों को प्रचार कर सकते हैं. So everybody has their area of expertise where they have some opportunity to bring people to Prabhupada, to give Krishna consciousness. तो सभी भक्त अपने अपने अनुसार सेवा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, जिसमें वो विशेष अनुभव रखते हैं और श्रील प्रभुपाद के चरणों में सबको ला सकते हैं. So everyone has to develop this mentality. You have to develop preaching mentality. You have to look at yourself. I am a preacher. Whatever capacity I have, I shall preach Krishna consciousness. तो सभी को प्रचारक की मानसिकता को एक्सेप्ट करना चाहिए, अंदर आत्मसात करना चाहिए कि मैं भी प्रचार करना चाहिए और कृष्ण भक्त को बनाना चाहिए. Whatever little bit I know, whatever little bit I realized, that much I will give. मुझे अगर थोड़ा सा भी कुछ भी कृष्ण के बारे में पता है तो वो मैं दूसरों को बताऊंगा. So many Grihastha devotees, they begin Bhakti Vriksha programs in their home. They make their home available every week for people to come
just to hear Krishna Katha. बहुत सारे गृहस्थ भक्त भक्ति वृक्ष कार्यक्रम शुरू करते हैं और वो अपने घर को एक मंदिर बनाते हैं ताकि सभी लोग आए और वहां पे भगवान का नाम सुने और Very powerful. Bhakti Vriksha is a very powerful medium of convincing people to follow Sanatan Dharma. भक्ति वृक्ष बहुत ताकतवर माध्यम है किसी भी व्यक्ति को सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए. Because when you have a house program, kabhi once every now and then, yearly, ek time, somebody comes, have a kirtan, thought about pravachan, thought about prasadam, Ajananda ki jai, it's good. लेकिन कभी किसी हमारा अगर सामान्य कार्यक्रम होते हैं घर पे जो साल में या 6 महीने में एक बार होते हैं तो उसमें वो आते हैं कीर्तन होता है भक्त आते हैं चले जाते हैं लेकिन वो असली प्रचार उसमें नहीं हो पाता है. But we are very dull minded, so we have to hear again and again and again, repetition. You have to keep hearing again, then it becomes fixed in the mind. लेकिन कलयुग में हमारी बुद्धि थोड़ी सी कम हो गई है डल हो गई है तो हमें हर चीज को बार बार सुनना पड़ता है तभी वो हमारे दिमाग में घुसता है. So sometimes we tell devotees, oh, you should start Bhakti Vriksha in your home. इसलिए हमें भक्तों को बोलना पड़ता है कि आप अपने घर में भक्ति वृक्ष शुरू करिए. Then, oh, Prabhuji, I don't know anything. How can I? I don't know what to speak. I don't know what to say. No, very difficult. जो भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी मैं कैसे कर सकता हूँ मेरी भी क्षमता नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ सबके सामने. I spoke with Indra Swami few years ago, many years back. I was asking him, Maharaj, for you it's just natural. You come up, you do huge kirtan, amazing kirtan, you give such wonderful class. For you it's very easy. प्रभु जी ने इंद्रदुम्न स्वामी महाराज से बात करी थी कुछ सालों पहले. बोले महाराज जी आप बहुत ही आसानी से इतना सुंदर कीर्तन करते हैं और बहुत से लोगों को प्रचार करते हैं ये आप में बहुत ही प्राकृतिक रूप से आता है. So I was surprised. He told me, no, it's not like that. Every time I have to speak something, I get big tension. I feel butterfly in my stomach. I don't know what to say, what will come out. I don't know, I'll make a mistake or not. तो महाराज जी बोलते हैं कि नहीं इतना आसान नहीं है. जब भी मुझे बोलने का अवसर होता है तब मुझे बड़ी चिंता होती है. मुझे मेरे पेट में अजीब सा महसूस होता है और सोचता हूँ कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा. So I was surprised. It's like that, no? It's like that. Somebody who's practiced becomes a little easier because you practice. But it's not simple. It's not so easy to speak to someone else and to speak to strangers and try to convince them. तो प्रभु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस प्रकार से हो सकता है लेकिन वास्तविकता में यही है कि हमेशा किसी नए को बोलने के लिए हमको सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है. So I said, then what do you do? He said, I just pray to Prabhupada. Please help me say something properly. Just let me say something proper. तो प्रभु जी ने पूछा कि महाराज जी को कि फिर आप क्या करते हैं. तो वे बोलते हैं कि मैं जस्ट शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करता हूँ कि शिला प्रभुपाद मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ. And we're all here together. So if we find some stubborn person we can't convince, and you bring them to Mayapur Vasi, bring them to Madan Govind, you bring him to some other preacher who can convince him. हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं तो उनको आप मायापुर वासी प्रभु जी मदन गोविंद प्रभु जी इनके पास लेके आइए तो वो उनको कन्विंस करेंगे. But the real thing is feeling, identifying our identity. We should feel, I am a preacher. I am Prabhupada's servant. I am a preacher. लेकिन वास्तविकता में हमें खुद को प्रचारक मानना है. हमें महसूस करना चाहिए अंदर से कि हम प्रचारक हैं और हमें हमेशा कृष्ण के बारे में प्रचार करना चाहिए. See, Gopal Krishna Goswami, he has a different capacity than what we have. जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं उनकी बहुत अलग कैपेसिटी है बहुत अलग क्षमता है जितना हमारी नहीं है. In Jaipur, I can phone some patron, one of our life members, one of our donors, and I can speak to him. This month is Gita Jayanti. Please do 1,000 Bhagavad Gita sponsor. We'll distribute in the jail. जैसे जयपुर में प्रभु जी जो दान दाता है जो उनको फोन करते हैं कि गीता जयंती है तो 1000 गीता हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है हम जेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Right?
I can make phone call. Gopal Krishna Maharaj, he can make phone call to the head of ONGC or Steel Authority of India. He can make a phone call. We're having Gita Jayanti. Please give 40,000 Bhagavad Gita. Please donate 60,000 Bhagavad Gita. जबकि गोपाल कृष्ण महाराज जी किसी भी ऐसे सेल या फिर ओएनजीसी से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को फोन कर सकते हैं और उनको सीधे बोल सकते हैं कि इस बार आप गीता जयंती पे 40,000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करवाइए, 60,000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। तो उनकी क्षमता बहुत ऊपर है। Amazing, huh? 40,000, one phone call. आज के 1 लाख हो गया। कितना आश्चर्य वाली बात है, देखो सिर्फ एक फोन के ऊपर 1 लाख भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। So everyone has their capacity. There's no doubt. इसका मतलब ये कि सभी की अलग-अलग क्षमता है। My favorite pastime, of course, is when Lord Ram is on the ocean and building a bridge towards Lanka. प्रभु जी का सबसे अच्छी लीला उनको मुझे लगती है जैसे भगवान राम समुद्र के बीच में सेतु बंध बना रहे थे। And Lord Hanuman is flying backwards and forwards, and he's taking the tops of the mountain tops. If you go that area in South India, all the mountains, they come up and then they're flat. The tops are gone. You can see all the tops are gone. So Hanuman ripped off all the tops of the mountains and threw in the ocean to build a bridge to Lanka. और जबकि उस समय हनुमान जी पूरे सेतुबंध के ऊपर उड़ रहे थे और आप जब दक्षिण भारत जाएंगे तो पहाड़ के ऊपर की चोटी नहीं दिखेगी। पहाड़ के ऊपर की चोटी को हनुमान जी तोड़ लेते थे और सेतुबंध में बनाने में उपयोग में लेते थे। If the scientist or geologist goes down there, what kind of pahad is this? They don't understand how it became like this. जब वैज्ञानिक जाते हैं बड़ा आश्चर्य होता है उनको ये किस प्रकार के पहाड़ है जब ऊपर से बिल्कुल ही फ्लैट है और अंदर नीचे से टेढ़े हैं। So on the edge of the ocean, the story is told that there was a spider laying on his back and kicking the sand in the ocean. वहाँ पे एक बताते हैं एक मकड़ी थी और वो एक रेती के कण को आगे बढ़ा रही थी। And Lord Hanuman is coming and he's worried because if I throw a mountain top in the ocean, it creates tsunami, little bit wave will come and that spider will get washed away. हनुमान जी को बड़ी चिंता हो रही थी कि अगर मैं ऊपर से फेंकूंगा पहाड़ तो नीचे जो मकड़ी है वो डूब जाएगी। So he's saying, my dear small brother, please turn aside. I'm doing some big job here. You can see some big thing going on. You please save yourself. हनुमान जी बोल रहे थे कि मेरे छोटे भाई यहाँ से हट जाओ वरना आप डूब जाओगे। At that time, Lord Ram came and said, no, don't consider. That spider is doing equal of you. तो भगवान राम उस समय आए, उन्होंने बोला कि नहीं जितना आप सेवा कर रहे हैं उतना ही एक छोटी मकड़ी भी सेवा कर रही है। He's laying on his back and 8 legs. He's kicking with all 8 legs as much as he can do. He's also working full heart. मकड़ी भी अपने कमर के बल पे लेट कर और अपने पूरी क्षमता से उस रेती के कण को आगे बढ़ा रही है और सहयोग दे रही है। जितना आप सहयोग दे रहे हैं उतना ही ये भी सहयोग दे रही है। So Lord Ram is explaining, I accept his seva, equal of yours, exactly same heart as you are working, same heart he's working. मैं इनकी सेवा को और आपकी सेवा दोनों को समान भाव से ग्रहण कर रहा हूँ। But capacity is different. Hanuman's capacity is unlimited. लेकिन क्षमताएं अलग-अलग है। हनुमान जी की क्षमता अनंत है। So Prabhupada was speaking like that everyone has their capacity. Everyone should participate. Everybody should become a preacher. तो श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे थे कि सभी की अलग-अलग क्षमता है, लेकिन सभी को आप पे आना है, आगे बढ़ना है और सेवा करनी है। So it's December and it's Gita Jayanti. So everyone, this is easy service for everyone. Anyone can help distribute Bhagavad Gita. तो दिसंबर आ रहा है, गीता जयंती आ रही है, गीता मैराथन आ रहा है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप आइए और गीता ले जाइए और डिस्ट्रीब्यूट करिए। We were talking yesterday. I have one friend. I haven't seen him now many years. He lives in America. हम प्रभु जी बात कर रहे थे अपने मित्र से अमेरिका में। His grihasta. Now he must be 70 years old. And I saw a few days ago, last year, he did a huge book distribution. Some 15,000 Bhagavad Gita he distributed himself last year.
उनकी उम्र 70 साल होगी और इस उम्र में उन्होंने लास्ट ईयर करीब 15,000 भगवत गीता वितरित की है। He was in Australia for a few years. He lived in Sydney Temple. Very senior devotee, but very, very humble devotee. वो कुछ पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में थे, सिडनी में थे, तो उनसे मिले, बड़े ही नम्र भक्त हैं। He would chant his 16 rounds. He would chant one full mala, then he'll read a chapter of Gita, and then chant the second mala and a chapter of Gita. It takes a long time. वो अपनी एक माला करते हैं, फिर भगवद गीता का एक पूरा अध्याय पढ़ते हैं, फिर एक माला करते हैं। काफी समय लगता है उनको 16 माला करने में। So when he joined ISKCON in New York, his first service was book distribution. He would go to the airport and distribute books all day long. जब उन्होंने न्यूयॉर्क में जब ज्वाइन किया था आश्रम को, तब 50 years ago, 50 साल पहले he started book distribution in New York. Then he came to Australia, he got married and continued. His service was book distribution. और उसके बाद वो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आ गए, लेकिन उनकी सेवा वही रही, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। And I didn't hear about him for years because he's a very humble person. But just I read recently, he's still now, he's back in New York, in Los Angeles, sorry. He's back in Los Angeles and all he does is book distribution. और मुझे काफी सालों तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना क्योंकि वो बहुत नम्र भक्त थे, लेकिन जैसे ही इनको देखा, उन्होंने उनके सामने लिस्ट आई तो पता पड़ा कि इन्होंने इतनी सारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी है। So we encourage everyone, participate in whatever capacity you have. Participate and help us, help Prabhupada distribute books. तो प्रभु जी से बोल रहे हैं कि हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आप सभी की जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार आप श्रील प्रभुपाद के मिशन में सहायता करिए, सेवा करिए। Many times Prabhupada mentioned how the communists have flourished in different areas just by dropping pamphlets and by leaflets and making books, printing books. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कम्युनिस्ट जो समाजवादी है शामिल, तो वो किसी किसी एरिया में सिर्फ इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर जगह, और हर जगह कुछ न कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके कारण से उनका प्रभाव वहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। So somehow if we can get these books into people's hands, they will have effect. हमको ये के प्रकार किसी भी प्रकार से भगवत गीता को लोगों के हाथ में देनी है, तो उससे उसका प्रभाव होगा ही होगा। And that story Harikesh Prabhu was telling years ago that in Vladivostok in Russia, right on the far side of Russia, in the middle of no place, there was some Hare Krishnas doing Harinam Sankirtan in the main street. ऋषिकेश प्रभु बता रहे थे कथा को, जिसमें रशिया में हुआ था, रशिया के जहाँ पे कोई भी भक्त नहीं थे, कोई भी आदमी नहीं था। And the KGB arrested them and they took them for interrogation. That who has come here and taught you this Hare Krishna business? और केजीबी ने उनको पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें यहाँ पे इतना दूर कौन आया और तुम्हें किसने हरे कृष्ण भक्त बनाया है? No, nobody came here. Nobody came here. KGB, no, must be. This is so detailed. There are so many principles involved. Must be someone came here, some spy, somebody's come here to infiltrate and teach you this. तो केजीबी जो उनकी जासूसी संस्था है रशिया की, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि कोई नहीं आया, तुम्हें प्रचार किसी ने किया, ऐसा लगता है तुम्हें देख के तुम्हें किसी ने भक्त बनाया है, प्रचार किया है। So then the Russian devotee said, actually my friends, his uncle is in merchant navy. तो बोलते हैं कि एक भक्त बोलते हैं कि उनके अंकल मर्चेंट नेवी में थे। So he had been on merchant navy ship and went to America, but they don't let them off the ship in those days. When the Russian ship would go to America delivering goods, they won't let them go on land because they'll get contaminated. और उस समय मर्चेंट नेवी जहाज पे रशिया से अमेरिका गए थे, तो लेकिन रशिया वालों को अमेरिका से में उतरने की अनुमति नहीं थी, वरना वो अशुद्ध माना जाएगा उनको। But there's some preacher, some devotee there, some preacher, he was working on the docks. So he had the capacity. So he would go on these Russian ships and he had Bhagavad Gita in Russian language. And he was sneaking on the ships illegally and distributing Bhagavad Gita to all the Russian sailors. लेकिन अमेरिका के कुछ भक्त वो किसी न किसी तरीके से उस जहाज पे चढ़ जाते थे और
अपने क्षमता के अनुसार वहाँ पे लोगों को भगवत गीता को रशियन लैंग्वेज में भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। And that Russian sailor, he got stuck. That devotee was very forceful. By forcefully, he gave him a Gita. By force, he paid him, and he put it in his bag and he left it. और रशियन जो सेलर था जहाज चलाने वाला उनको जब मिल गई भगवत गीता तो किसी भी तरीके से उनको कन्विंस किया गया और उनको भगवत गीता बेची गई। And he took it back to Vladivostok, showed his wife, and she was, well, he was just wasting money, and they put it under the table. और वहाँ पे जब रशियन वापिस अपने घर पे आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने सोचा कि ये तुमने पैसे को बर्बाद किया है। And the nephew came in the house and, "Ye kya hai? What is this?" And the uncle said, "I don't know. Some Hare Krishna caught me. I couldn't escape. I had to buy this thing. I don't know what it is." उनका भांजा आया तो उनको बोला कि ये क्या है। उन्होंने गीता देखी तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे जबरदस्ती पकड़ा दी है इस चीज को, आप तुम देख लो क्या करना है इसका। And that nephew said, "I'll take it." Yeah, take it, no problem. He took it home. He put it on the shelf. He also never read it. और भांजे ने बोला, भांजे ने बोला क्या मैं ले सकता हूँ उसको? बोला हाँ ले जाओ, मेरे किसी काम की नहीं है। तो वो ले गया, उसने अपनी शेल्फ पे रखी, लेकिन उसको उसने भी नहीं पढ़ा। Then his friend was visiting his house. "What is that? What is that thing?" Nice, some guy in a chariot with 4 horses in the front. Beautiful picture on the Gita. So he said, "What is that?" He said, "Oh, this is some Hindu book from my uncle got from America." तो उस भांजे के मित्र ने देखा कि ये कौन सी किताब बड़ी आकर्षित कर दी है कि उसमें कोई व्यक्ति है जो रथ पे बैठा हुआ है, तो बोले कि किसी हिंदू ने हमको ये जबरदस्ती बुक दी है। So he opened it. He opened it. Hey, look at this. See, it says here like this. It's saying like, that's good. That's common sense, right? This is just common sense. तो जब पहली बार मित्र ने किताब खोली इन सब लोगों में से, तो उसको बड़ा आश्चर्य, अच्छी बात लिखी हुई है जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। So he took it home and he got his friends and they started Bhakti Vriksha. And they started every day reading Bhagavad Gita. वो मित्र ले गया गीता और घर पे भक्ति वृक्ष को स्टार्ट किया और रोज भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। They got some wood and they carved out some jap malas and they made their own japa beads. और उन्होंने किसी प्रकार से जपा माला बनाई लकड़ी से। They converted their Russian drum to their own mridanga. रशियन ड्रम को उन्होंने मृदंग बनाया। Russian people are very good with their hands, experts. So they made their own kartal, they made mridanga, they made all the instruments. रशियन काफी बड़े अच्छे हाथों से, मतलब काफी अच्छे होते हैं, काफी कुछ अपने हाथ से बना सकते हैं, कलाकार होते हैं वो। And some purport Prabhupada says a real preacher will go out and distribute the holy name. तो शिला प्रभुपाद का एक तात्पर्य पड़ा कि जो वास्तविक प्रचार है वो बाहर जाएंगे और भगवान नाम का प्रचार करेंगे। So they're thinking, see, Prabhupada said, if you really are a preacher, then you're supposed to go out and distribute holy name. Chalo, let's go. So they would start going out every day and doing Harinam Sankirtan. शिला प्रभुपाद के तात्पर्य से उनको इतना प्रेरणा मिली कि वो रोज बाहर जाने लगे और भगवान नाम का प्रचार और जोर से करने लगे। Just from this one book, it is so powerful. Bhagavad Gita is so powerful. If anybody will read, seriously read Bhagavad Gita, their material life is finished. और ये सिर्फ एक किताब भगवत गीता वो इतनी ताकतवर है कि अगर आपने सिर्फ वो एक भगवत गीता पढ़ ली तो आपका भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। Just like all of us, if you speak to anyone here and ask them, how did you come in contact with ISKCON? How did you come in contact with Prabhupada? What was the thing that influenced you? जैसे हम सभी यहाँ पे भक्त हैं, उनको पूछते हैं कि तुम किस प्रकार से आए, किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली यहाँ पे जुड़ने की। Now, everybody has his story. Everybody has his amazing story. Oh, I was here, I was there, I went there, this happened, I met this person. But when it comes down, the last thing, and then I got Bhagavad Gita. तो सभी का स्टोरी है कि कोई कहाँ पे था, कोई कहाँ पे था, सबका जब पूछेंगे तो लेकिन अंतिम में पता पड़ेगा कि उनको भगवत गीता प्राप्त हुई। And you can't tell, you can't judge. He will be a devotee, he will not be, he will read Gita, he will not. You cannot understand. आप किसी को ये देख के जज नहीं कर सकते कि वो गीता पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा, वो समझेगा, नहीं समझेगा, वो देगा, नहीं देगा।
when I joined Australia, it is not favorable to Hindu dharma. प्रभु जी ने जब ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन किया था, ऑस्ट्रेलिया में जुड़े थे, तो वो हिंदू धर्म के लिए इतना अच्छे से फेवरेबल नहीं है वो। Smoking, drinking, alcohol, non-veg, all bad habits. They are expert in all 4 sinful activities in Australia. वहाँ पे सिगरेट, मदिरापान, सभी गलत प्रकार के कार्य सभी कुछ वहाँ पे होते हैं। They are not tolerant, not so tolerant to other religion, other philosophy. वो दूसरों के धर्म को अपनाने में या फिर उनके बारे में सुनने के लिए धैर्य नहीं है। So first day I joined, I was wearing jeans and t-shirt, and the temple president said, "Oh, tomorrow is Saturday morning. All devotees will go to the mall, shopping mall, and do big kirtan." So I said, "Okay, I'll also go." प्रभु जी ने ज्वाइन किया था तो जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, तो टेंपल के जो प्रमुख थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि कल हम मॉल में जाएंगे और वहां पे भगवान नाम का प्रचार करेंगे। And I was holding a sign. They're all doing kirtan, and they gave me a signboard and said, "Do not harass the Hare Krishnas." और प्रभु जी को एक तख्ती दी, उस पे लिख रखा था कि हरे कृष्णा भक्तों को परेशान न करें। I didn't understand what was this. What's for this sign? तो प्रभु जी समझ नहीं पाए थे कि उनको जो दी गई तख्ती वो किस लिए दी गई है। So half an hour kirtan, and then all the police cars came, and all the devotees, they got arrested. I dropped the sign. तो आधे घंटे कीर्तन चला और उसके बाद अचानक से पुलिस की सायरन बजा और पुलिस आई और सभी भक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो प्रभु जी ने वो तख्ती फेंक दी। My first day in the temple, what is this? Then I went back and told temple president, "Where's the devotee?" They're all in jail. Only I am saved. तो प्रभु जी ने पूछा कि वापस वो गए कि किस प्रकार का ये प्रचार चल रहा है यहाँ पे। वो उनको प्रभु को पूछा, बोले कि बाकी कहाँ गए सब? बोले सबको जेल में डाल दिया है। So not such an easy place to preach Krishna consciousness. तो ऑस्ट्रेलिया आसान जगह नहीं है भगवान नाम का प्रचार करने के लिए। Not today. Today everyone, Adelaide, Sydney, now they love the Hare Krishnas. There's no problem. ये आज की बात नहीं हो रही है, आज जब प्रभु जी ने ज्वाइन किया उस समय की बात हो रही है। आज तो सभी वहाँ पे भगवान के नाम से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। So the temple president gave me this small basket, had 2 little wheels on it, so a little basket. It's a shopping trolley. Young people would not have a shopping trolley. Older ladies go to the shop. It's for old ladies to go to shopping, a shopping trolley. खरीदारी करने के लिए उन्होंने एक ट्रॉली दी, बास्केट दी प्रभु जी को। That was pretty quick. It's for elderly ladies, a shopping trolley only for elderly ladies. एक्चुअली जो ट्रॉली होती है वो सिर्फ जो बूढ़ी औरतें होती है उनके लिए ही काम आती है। It means young man, young lady, having this means you'll be very embarrassed. What is this? मतलब अगर यंग है, यूथ जवान है लोग, तो वो अपने हाथ में सामान उठा सकते हैं, उनको ट्रॉली की जरूरत नहीं पड़ेगी। So it was not easy. Shave your head, put on a bed sheet, put some dirt on your face, some tilak, and take this granny's shopping trolley full of books and go to the mall and sell books. प्रभु जी जीन्स और टी शर्ट में थे, उनको बोला कि ये सब छोड़ो और नीचे आप धोती को प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारे चद्दर है, चद्दर बांध लो और सिर पे आप तिलक होता रहे कि वो मिट्टी लगा लो और अपने पूरे जो बाल है उनको शेव कर लीजिए और उसके बाद वो बास्केट लीजिए हाथ में और उसके बाद शॉपिंग मॉल में जाके प्रचार करिए। So there I was standing in the mall and catching people and telling, "This is Bhagavad Gita." I never read it yet. I was only there for 1 week. This is Bhagavad Gita, very beautiful. It'll change your life. Please take 1 Gita. तो प्रभु जी ने उस समय तक गीता पढ़ी नहीं थी, लेकिन उनके बास्केट में भगवद गीता थी, तो वो सबको दिखा रहे थे कि देखो ये भगवद गीता है, तुम्हारे जीवन को परिवर्तन कर देगा, तुम जरूर इसको पढ़िए। But by doing it, by surrendering to that whole mental thing and controlling my mind and going there, and the president told me to do it, I'm going to go and do it. By surrendering to it, I learned so many things. तो लेकिन जब उनको टेंपल के प्रेसिडेंट की सेवा जब उन्होंने बताई तो उन्होंने उनकी सेवा से शरण कर लिया और शरणागति होगी, तो शरणागति के कारण से उनको पूरी भगवता समझ में आने लगी। So 3 things happened, 3 different things happened. तो 3 प्रमुख चीजें हुई। One person I met, very big, much bigger than me, big person,
And he seemed very friendly, and I thought, oh, he looks good. And I approached him, and he was very friendly, and he was asking questions, and I gave him the Gita, and he ripped it in 2 pieces. तो पहला एक व्यक्ति मिला जो प्रभु जी से भी काफी लंबा बड़ा चौड़ा था, तो काफी मित्रतापूर्वक व्यवहार किया और उसने गीता दिखाई प्रभु जी ने, तो उन्होंने देखी और गीता को 2-3 पार्ट में फाड़ दिया. And I was shocked. I became very angry, and I went back to the temple, and I put my jeans and my t-shirt on, and I thought, I'll go back and I'll beat him. प्रभु जी को बहुत गुस्सा आया कि इस प्रकार से कोई गीता को फाड़ सकता है क्या. वो मंदिर गए, उन्होंने सोचा कि ऑफिस से मैं जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा, ऑफिस में उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और उसकी अच्छी सी पिटाई करूंगा. Luckily, I didn't find him. लेकिन प्रभु जी को ऑफिस में मिला नहीं व्यक्ति. Later on, a young couple came, young boy and his girlfriend, they came and they were asking nice questions, and we were discussing Bhagavad Gita. और फिर उसके बाद एक युवा जोड़ा मिला और वहाँ पे उनको अच्छे से प्रश्न पूछ रहा था, तो उनको उत्तर दे रहे थे. And I was trying my best, whatever I knew, to present Krishna consciousness and make them attracted towards Gita. प्रभु जी को जो भी पता था उसके बारे में उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और उनको आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे. And another lady, business lady, like a business suit type dress, very well cut, very presentable lady came. Obviously, very intelligent woman came, and she was standing behind and she was listening. And I was looking and thinking, oh, I'll also try to give her Gita. तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो औरत थी वो भी आई थी, वो अच्छे से वेल ड्रेस थी, अच्छे से सूट पहन रखा था, तो वो भी बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीजें सुन रही थी जो प्रभु जी प्रचार कर रहे थे. So she looked like a candidate, but actually she was hardcore, born again Christian. तो ऐसा लग रहा था कि वो भव्यता लेगी, लेकिन वो सुन रही थी, लेकिन वो एक क्रिश्चियन थी और वो चेंज नहीं होने वाली थी. So I made a mistake. I never made that mistake again. That she said to me, "What's this book about?" तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैंने गलती करी और उसके बाद मैंने वापस वो गलती नहीं करी. उस लेडी ने पूछा कि ये किताब किस संदर्भ में है. And I said, "Oh well, this is about Lord Krishna's teachings to his friend Arjun, because in ISKCON we think that Krishna is God, Krishna is Bhagavan." और प्रभु जी ने बोला कि ये भगवत गीता है जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन अपने मित्र अर्जुन को ये प्रचार कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं. And she caught me. She said, "Oh, you think this Krishna is Bhagavan. You just think he's Bhagavan. You don't know he's Bhagavan. It's just you think he's Bhagavan. All nonsense, all speculation." And she bewildered me. तो प्रभु जी ने उनको बोला कि हम सोचते हैं इसको में कि कृष्णा भगवान है, तो वो हम सोचते हैं इस शब्द को पकड़ लिया कि तुम सिर्फ सोचते हो, मतलब तुम मानते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि भगवान है, तो मतलब तुम सिर्फ मनगढ़ंत बातें कर रहे हो. So don't make the mistake now. Anybody ask me, Krishna is Bhagavan. We know Krishna is Bhagavan. I don't think, I know Krishna is Bhagavan. अभी प्रभु जी गलती नहीं करते हैं. अभी कोई मिलता है तो उसके बाद प्रभु जी ने क्या बोला कि हाँ मैं जानता हूँ कि कृष्ण भगवान है, मैं सोचता नहीं हूँ, कृष्ण भगवान है. So we are not expert, but if we try, Krishna gives the intelligence how to preach. तो हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण हमको बुद्धि देंगे कि किस प्रकार से प्रचार करनी है. So every day we're in the mall distributing books, trying to distribute books, and there was always a group of, like a gang. There was a gang at the other end of the mall. They were there every day, this gang. तो प्रभु जी बोलते रोज जाते थे मॉल में प्रचार करने के लिए और अपने हिसाब से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते भी थे, लेकिन वहाँ पे एक गैंग थी जो कि रोज आती थी वहाँ पे. They were rough. 4 or 5 guys, 2 or 3 girls, very pretty girls and very rough, tattoos, very rough guys. तो वो कुछ हिप्पी जैसे लोग थे जो कि अपने हाथ में टैटू बनाते थे और थोड़े से राउडी बोले अपने लोकल लैंग्वेज में, उस प्रकार के लोग थे. Hippie nahi. Hippie is very soft. Hippie is easy. These were gunda. गुंडा. That's the word. They are gunda. तो वो गुंडे प्रकार के लोग थे. और
So I always stayed away. I thought, no, these gundas, they're not going to take to Krishna consciousness. Very rough. Stay away from the gundas. Stay down the other end. तो प्रभु जी ने सोचा कि ये गुंडे लोग हैं तो इनको प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है, इनसे दूर रहे तो ही अच्छा रहेगा. But one day I was with a young brahmachari, with distributing books, and somebody was harassing that. He was a young devotee, 17, 18 years old, and somebody was harassing him. तो एक दिन की बात है, एक युवा ब्रह्मचारी था, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई उनको बहुत परेशान कर रहा था. And that head gunda, he also had a shaved head just like us, shaved his head. He had tattoos around his eyes, tattoos around his neck. Dangerous looking guy. जो उसका प्रमुख गुंडा था, तो उसका भी शेव हेड था, मतलब उसके बाल नहीं थे, तो वो देख रहा था वो क्या हो रहा है, उसके भी टैटू थे पूरे चेहरे पे. So he came down, and I thought, oh no, now the gunda's coming. Now we are dead. We are finished now. तो जैसे वो वहाँ पे आया, तो प्रभु जी को डर लगा कि अब तो ये हमको कुछ भी कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. He came down and he grabbed those two people who were harassing this brahmachari. He grabbed them, gave them slap, sent them on their way, and then he told us, I'm watching you, Hare Krishna's here. I like you guys. तो वो वहाँ पे आया